Assalamu alaikum. Our today's lecture is about alcohol. It's a long lecture, and I will prepare this in short because it will take a lot of time. Alcohol is also called inebriants. Inebriants mean brain out of control. There is a word that is called aberrant. Aberrant is called when brain is in control. Inebriant is when brain out of control. Alcohol or ethyl alcohol, C2H5OH. This is its chemical formula. It's a hydroxy derivatives up to three hydroxyl groups. Lesser common alcohol contains more than one hydroxy group or carbon atoms. The lesser common alcohol contains more than one hydroxy group or carbon atoms. The most common alcohols in the case, in the matter of toxicity, ethanol, methanol, and isopropyl. These are most common alcohols. Longer the carbon chains, greater is the toxicity, with the exception of methanol, क्योंकि methanol में carbon chain जो है वो longer नहीं होता, लेकिन इसकी toxicity सबसे ज़्यादा है. Besides that, the longer the carbon chain, greater is the toxicity. Physical properties में ये एक transparent, colorless, volatile liquid है with spirituous odor and burning taste. The first burning taste occurs in the mouth and throat, and suddenly it finishes because of that anesthetic properties. क्योंकि burning taste होती है माउथ में और गले में, और suddenly it works कि ये क्योंकि बाकी के दर्द शर्द पेन रिलीव करता है, तो वो बर्निंग पेन भी सडनली रिलीफ होती है, लेकिन स्टार्ट में. इसीलिए लोग इसमें अक्सर पानी डाल के लेते होते हैं या बर्फ डाल के. So the transparent, colorless, volatile liquid with spirituous odor and burning taste. It has a widespread use. Widespread use ये कि ये बहुत ज़्यादा पूरी दुनिया में एक जैसा यूज़ होता है. Although it's haram in the Muslim society, in the Muslim countries, but still it is used in a hidden way in many societies, especially in the elite societies. ये जो lower class है, lower middle class है, उसमें भी यूज़ होता है, लेकिन दोनों की usage quality है उसमें बहुत फ़र्क होता है. So it has a widespread usage. It's an oldest drug previously, क्योंकि ये दर्द को रिलीव करता था, तो it was used for as a painkiller also. Beside it also relieves the agonies and miseries, but it was also used as a painkiller. So it's an oldest drugs जो कि जब तक ये इस्लाम में हराम नहीं था, it was used widespread in every religion. Most commonly used psychoactive drugs. Psychoactive drugs जो है इसमें most commonly used चीज़ है, जो कि बहुत ज़्यादा psychoactive drugs के तौर पे यूज़ होता है. Beside that, the other psychoactive drugs जो है वो निकोटीन है, कैनबिस है, और उसके अलावा कोकेन है. These are also psychoactive drugs. Most commonly used जो है इसमें सिगरेट के बाद, मतलब अगर आप देखें पाकिस्तान में तो शायद सिगरेट ही हो, स्मोकिंग ही हो, निकोटीन हो, लेकिन बाकी दुनिया में शायद ये ज़्यादा से कॉमन है. It's a powerful CNS depressant. Acts primarily on the RAS reticular activating system. ये एक powerful CNS depressant है और acts primarily on the reticular activating systems. Its actions are qualitatively similar to those of the general anesthetics. जैसे general anesthetic काम करता है, यानी suddenly बंदे को relief दे देता है, उसको सुला देता है, उसको बिल्कुल खामोश कर देता है. एक्शन जो है इसकी क्वालिटेटिवली उसी तरह ही है. इसीलिए ये जो ओल्डेस्ट ड्रग था, इट वाज यूज्ड क्योंकि ये एक एज एन एस्थेटिक्स भी यूज़ होता था, स्पेशली जब कभी कोई सर्जरी होती थी पुराने ज़माने में, कोई वूंड होता था, कोई स्कार होता था, कोई ऐसा कोई प्रोसीजर होता था सर्जिकल, उससे पहले ये यूज़ किया जाता था. It has a lower order of toxicity as compared to methanol and isopropanol. So isopropanol.
What is the mechanism of toxicity? Exact mechanism are not commonly understood, completely understood. Exact mechanism जो है is not that clearly known. The CNS is selectively affected. CNS जो है वो selectively affected होता है और ethanol acts directly on the neuronal membrane. Ethanol acts directly on the neuronal membrane. At membrane it may involves an ion transport and biogenic amines. These are something जो कि बहुत ज़्यादा एडवांस है, मैं इससे ज़रा जल्दी go through जाऊँगा. At membrane it may involve ion transport and biogenic amines. Effects of ethanol जो है on CNS, it is directly proportional to its blood concentration. Blood concentration जितनी ज़्यादा होती जाएगी, effects जो है CNS पे वो उतना ज़्यादा होता जाएगा. It's had direct control with the blood concentration of ethanol. So the first region that is affected in the reticular activating system is it disrupts the motor and thought process. ये disruption करता है of the motor and thought process की जो first region है. Suppression of the cerebral cortex causing behavioral changes. Suppression of the cerebral cortex causing behavioral changes. Then ethanol also depresses CNS in descending order from cortex to medulla. Low concentration में cortex, उसके बाद midbrain, उसके बाद medulla पे आता है. So जो ऊपर से नीचे मतलब ये कि it comes from above downward. So these were the ethanol depresses CNS in descending order from cortex to medulla. Then toxicokinetic of injection. Toxicokinetic of injection is that it is absorbed. Absorption जो इसकी है slightly polar है and has a weak electronic charge and lower molecular weight. Miscible in water and lipid soluble. ये जो है इसकी जो absorption है वह water के साथ है, ये water को follow करता है और जैसे water की absorption होती है वैसे ही इसी की होती है. It can be miscible in water and other lipid soluble. And easily absorbed and passed through cell membrane by simple diffusion. Simple diffusion से ये जो है cell membrane से absorb हो जाता है. Roots जो है इसके most important is ingestion है, लोग इसको पीते हैं. Then inhalation of vaporized ethanol or through skin can also occur. ये बहुत कम है लेकिन होता है. Factors affecting rate of absorption. जो factors है affect करते हैं rate of absorption को. Food in the stomach. अगर food बहुत ज़्यादा है stomach में या full है तो इसका जो rate of absorption है that will be slow. अगर food नहीं है, खाली पेट है तो फिर इसकी absorption बहुत fast होती है. Then amount, concentration and composition of the molecule. जितनी ज़्यादा लेंगे, जितना वो concentrated होगा, जितना वो अच्छी quality का होगा, उतना वो ज़्यादा effective होगा. अगर amount कम है या उसको dilute किया गया है किसी और fluid के साथ, पानी के साथ, तो या इसकी जो composition है वो अच्छी वाली नहीं है तो फिर इसकी जो effect है वो बहुत ज़्यादा, इसके जो effect है वो इतने ज़्यादा fast नहीं होंगे. Distribution जो है इसकी after absorption it uniformly distributed throughout all tissues and body fluids parallel to water and blood supply of the each organ. So ये water को follow करता है, जिसी तरह उसकी absorption होती है उसी तरह ये इसकी भी absorption होती है. उसके बाद जैसे water की distribution है उसकी जो distribution of the body है different tissues में body fluids के साथ बिल्कुल ये उसके parallel काम करता है. blood supply भी उसी की तरह जारी होती है. Metabolism जो है इसकी 90 to 98% of the ethanol is removed by enzymatic oxidation, mostly liver और थोड़ा सा kidney से. ठीक है. 2 to 10% is excreted unchanged जो lungs और kidney के जरिए होता है. Some traces may be seen in sweats, in tears, in bile, in gastric juice, in saliva and in other secretions. तो हमने ये दो चीज़ें देखी. एक तो हमने टॉक्सिकोकाइनेटिक में इसकी एब्जॉर्प्शन देखी, ठीक है. उसके बाद हमने इसकी डिस्ट्रीब्यूशन देखी जो वाटर को फॉलो करती है. प्लस मेटाबॉलिज्म में देखा हमने 90 to 98% ऑफ द इथेनॉल इज रिमूव्ड बाय एंजाइमेटिक ऑक्सीडेशन स्पेशली इन द लिवर और उसके बाद किडनी में 2 to 10% जो है वो एक्सक्रीट होता है अनचेंज्ड. और ट्रेसेस कैन आल्सो बी सीन इन स्वेट, इन टीयर्स, इन बाइल, इन गैस्ट्रिक जूस, इन सलाइवा एंड इन अदर secretions. Ethanol is converted into acetaldehyde and this acetaldehyde is then converted into acetic acid and